Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Special welcome to Anuj Bhai, Abhishek, and Paresh Bhai. So today, Anuj from Ghaziabad, Abhishek from Siliguri, and Paresh Bhai from none other than the very important city of our country, Mumbai. So we'll be there to share some of our experiences. I think. साउथ से कोई एक होने से नॉर्थ ईस्ट तो साउथ हो जाता नहीं, so we will have some more people joining in. So even Rajiv da or Rahul or Abhishek or any one of us, whoever is there today, no, I'll request everyone. It's like like the previous sessions. No, it is not about something which is prepared or no. We are just going to share something. It is just going to be an extempo thing, and I am sure each one of us will add whatever. Even Yazdi Daruwala ji or Rakesh Tripathi ji, all those people who have been there, please share something. So good to see Paresh Bhai's daughter Charmi also joining. So that's so nice. Let's begin and begin. I will just have a little. Good evening, Paresh. Am I audible? Yes. Yes. Fine. So friends, let's give a compliment to all the season 14 participants or rather the speakers who have actually shared a lot of wisdom with all of us, starting with Sagar, who shared about retirement planning and the use of all the volatility tools which is there on our dashboard, then asset allocation with Devendra, and I shared volatility 2.0. Upinder shared the small things like SIPs and STP, but how they can be shared with a particular investor or a client to actually grow the business. Then goal planning, human life value calculation by Alpha, and estate planning with Girish, and fundamental analysis of stocks and the ratio, and then the ratio analysis by Shweta. So all this were like phenomenal. And the last immediate previous session with Rahul, that was like mind blowing for all of us, and a great takeaway from each and every session. So, but today's session, we have three people all together sharing ideas of whatever we have been doing. So welcome again, Abhishek, Anuj, and Paresh Bhai. We really look forward to hear from you about each and everything, whatever is being shared. So as we move forward, the format is going to be, we'll have year by year. I'll just share a slide and a small video, and after that, each one of will be speaking about their experiences, and we will show it in that form. Is that okay with everyone? Yes. Thank you. So just a little. Sharing a little about the first conference. We will have a little sharing by all three of you, and other than that, rest of us can also add. Hopefully, if I keep the picture there, will it be okay to share, or should I remove the picture?
Keep the picture. That will be helpful. Yes. I'll keep it, and then we have a small video with all the glimpses. And similarly, we will share other 2 years. So over to all three of you. Okay. Yeah. Good afternoon, everybody. This is Abhishek from Siliguri, and hello to all my friends and colleagues in FFF. Uh, so, like most of us, I am also associated with this FFF from the very beginning of this. So, the first conference of Financial Freedom Fraternity that was organized in the year 2020 during the COVID time. I remember that was a very unprecedented event, that was the COVID and lockdown and everything. And so Kanak sir conceptualize, that thing, why not do a virtual meeting, since we are unable to meet in person, and the energy level was there among us. And in the most of us, all the IFAs, all of the MFD fraternity, they are in a, due to this COVID and lockdown, they were directionless what to do during this time and all. So in that time, it has helped a lot, this kind of conference. So that united a lot of people. I think during that time, 100 to 125 uh, participants were there during the conference, and we have seen around 20 speaker during the 2 to 3 days event. I think it was held in July, 24 to 26 July. So first, the session was inaugurated by the theme. The theme was rebalancing, and Mr. S. Naren of ICICI Prudential given his presentation on asset allocation, followed by Mr. Ajit Menon, then Mr. Chandresh Nigam of Axis Mutual Fund, and Mr. Mahesh Patil of Aditya Birla, and so on. And not only this, some foreign speaker, like the speakers from outside India, say GPS girl Karen Jacobson and Sam Cotton. So they are also the present, and they have shared their inputs in different, like GPS girl shared the input on root recalculation, and that was a very nice concept. Then Mr. Ashish Vidyarthi, renowned actor, also shared his inputs as a motivational speaker during our conference. So that's a little bit glimpse. I now invite Paresh sir to share some, throw some more light on 2020 part. Hello. Hello. Go ahead, sir. You're audible. Hello. सर यू आर ऑडिबल, हाँ, कंप्लीटली अच्छा, ऑडिबल। हाँ, तो उस टाइम पे आशीष विद्यार्थी जी ने आने के साथ तुरंत एक ही वर्ड्स बताया कि आज मैंने 100 घंटा काम किया। अभी 100 घंटा कैसे का आदमी काम कर सकता है? तो उन्होंने बोला कि आज मुझे 1 घंटा बोलने का मौका मिला है, और उस टाइम पे कुछ 100 जन थे, तो उस हिसाब से 100 जन। तो उसका मतलब ये हुआ कि आईएपी करते रहो। ये पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट था कि ग्रुप मीटिंग करते रहो तो पता चलेगा कि आप वो एक साथ में ये मिलता है आपको, क्या बोलता है कि ग्रुप में आपका बात करके आपको ये न्यू क्लाइंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आईएपी का पता चला उसमें। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो उस हिसाब से फिर दूसरा एक था, मेरे ख्याल से हिमांशु बूचिया शायद थे वो, तो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया कि आप जो सुबह में उठते हो, सुबह में उठने के टाइम पे आधा घंटा, उठने के पहले आधा घंटा जो आप जो सोचते हो ना, वही आपको पूरे दिन में गारंटी के साथ सक्सेस हो गया आप। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में कि ऐसा ही गलत बोलता होगा। तो एक दिन मैंने खाली सोचा कि आज मुझे एक क्लाइंट के पास से इतना रुपए का चेक मिले। तो सामने से उनका फोन आया क्लाइंट का कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तू आ जा। और मैंने सोचा था खाली कि इतना रुपया का ही, तो उतने रुपये का ही चेक मिला मेरे को। तो उस हिसाब से हिमांशु सर ने भी बताया कि तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो मेरे उसी टाइम में मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम भी मैं करूंगा ये। अनुज मित्तल, अभी आप बताओ। अनुज जी आप म्यूट पे है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार
जैसे कि हम आज FFF कॉन्फ्रेंस की अपनी बियॉन्ड क्लासरूम की इतने पूरे महीने भर की क्लासेस के बाद आफ्टर मंथ क्लासेस हम यहाँ आज अपना FFF की कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि 2020 में जब पूरी दुनिया में रुकावट लग गई थी, तो कनक भैया ने एक नई शुरुआत की कोशिश करी कि हम कॉन्फ्रेंस करें। और डिजिटल कॉन्फ्रेंस उस समय करना, एक क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई थी और इतने सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे और नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हमने चालू करी। FFF की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जब से स्टार्ट हुई है, मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी हैं बहुत करीब से, कि एक तो कोई ना कोई ऐसा हम थीम बनाते हैं, जैसे सप्तांग हो गया या कोई भी थीम ऐसी बनाते हैं कोई भी, जैसे इस बार एलिमिनेट ऑटोमेट डेलीगेट, कि वो थीम में ही आदमी पूरा अपने आप को संभाल लेता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई भी देखोगे 2020 की स्लाइड जो स्क्रीन पर है, उसमें से ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री के लोगों को बुला रहे हैं। आउट ऑफ द इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट रोल हो सकते हैं, तो उसमें से आप देखो 12 में से 7 स्पीकर बाहर के हैं जो आउट ऑफ द इंडस्ट्री हैं, और टॉप लेवल के कोई कम्युनिकेशन पे काम करता है, कोई आपकी स्ट्रैटेजी पे काम करता है, कोई पीयर्स पे काम करता है। तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस अमंग अदर कॉन्फ्रेंसेस की व्हाई यू ज्वाइन FFF कॉन्फ्रेंस। नंबर 3, जब डिजिटल कॉन्फ्रेंस में हम कोई भी काम, हमने 2 साल डिजिटल कॉन्फ्रेंस करी, और तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ आपका टाई अप है। वी हैव अ मैगजीन, सो वो मैगजीन जब वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग विद द क्लाइंट्स, सो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंप्रेशन। तो ये 2020 जो मेरा रिव्यू कहता है कि स्पीकर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड रेयर स्पीशीज। एक होता है स्पीकर, एक होता है क्वालिटी स्पीकर। वी हैव क्वालिटी स्पीकर्स, और उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है। जैसे चाणक्य सर हैं, चाणक्य सर ने एक बात कही थी कि आप जब अगर अपने किसी एम्प्लॉयज को अगर भोजन खिला देते हो और उनका पेट भर देते हो, तो वो एम्प्लॉय कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें कॉन्फ्रेंसेस से मिलती हैं। और FFF कॉन्फ्रेंस के बारे में एक चीज और बोलूंगा कि FFF कॉन्फ्रेंस एक परिवार है। ये कोई एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस नहीं है कि आप नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में गए आए। FFF कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे साल भर का एंगेजमेंट मिलता है। पूरे साल भर कुछ ना कुछ हम लोग लर्निंग करते रहते हैं, पूरे साल भर आप सीखते रहते हैं। ये मैं बोलूंगा अभी पहले इसमें। कनक जी, हेलो हेलो, कनक भैया। Yes. So with this, let's see a little video on this. Maybe very little tips. And that the set is ready. And turning on video. And you have reached your destination. The Army's lessons are written in blood because mistakes come back in body bag. Digital. Thank you. This on. And I'm super excited about today's event. So a huge acknowledgement to Kanak and the rest of the team for putting this on. Cover your mind. We are not. All right, this excites me क्योंकि ये जिंदगी है और आप और मैं जिंदा हैं. Yes or yes? हम जिंदा हैं कि नहीं? Fantastic. So we are alive and we are ready for the players game conversation. All right. तो सबसे पहले मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं. ये conversation मेरे बारे में नहीं है, dear friends. मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी. आशीष student. पूरी जिंदगी मैं स्टूडेंट रहा हूँ. I have been a student all my life.
And that's something which I value. This world doesn't like sellers, but it loves people who can make a difference. लेकिन एक वादे के साथ में जाऊंगा यहां से कि आप खुद से ये वादा करें कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है. With this, that was the first year, and second year was again full of another enthusiasm with the theme called Saptang, and wherein we had all this people who are actually from the 7 different aspects of the leadership, the 7 leaders, which includes Swami, Janapada, Amatyas, Danda, Durga, Kosha, and Mitra of Chanakya. So I'd request each one of you to share certain things, and then we will have a small video on this also. So over to you all. So the second conference, 2021, that was kick-started with the first session with of Mr. Nilesh Shah of Kotak AMC. So it was based on the 7 pillars of leadership. So Mr. Nilesh Shah mentioned one thing, that the leader should have a clear vision of the ultimate goal that needs to be achieved. That was him, and then followed by it was Mr. Avilash Mishra from NSC Academy, then Mr. Motilal Oswal from Motilal Oswal Financial Services. Again, Mr. Naren gave some important lessons or some important tips on debt funds, and then Mr. D. Sivanandan, former DGP of Maharashtra, he took a session and mentioned another leadership aspect like done, and then during the tough time, how we can manage his team. He shared with us his experience, this thing. Then again we have Mr. Ajit Menon, that CEO. He gave a he shared a session on situational leadership and giving the example of Lord Vishnu. And then there was some gala session was also there, some entertainment part, and another good thing of this, that each and every conference, most top 10 influential volatility coaches is being rewarded and recognized throughout the conference. Though it was virtual, but all of us enjoyed and appreciated 10 best volatility coaches. And another new concept was introduced during the second FFF conference, that was the Kon Banega Clientpoti. That was a brainchild also again of Kanak sir, and that was also a huge success. So over to Paresh sir. उस टाइम पे संदीप मारवा और स्टूडियो राजस्थान साइड में कोई स्टूडियो का काम करते थे, तो उन्होंने ये सिखाया कि आपको जिंदगी में कभी हारना नहीं है, आपको मेहनत करती रहनी है. अगर आप हार गए तो आपके पीछे जो सारी फौज है आपकी, आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, आपके क्लाइंट लोग हैं, आपके स्टाफ लोग हैं, वो भी नर्वस हो जाते हैं. तो उससे अच्छा आपको उनसे कभी भी मोटिवेट वाला ही बात करना चाहिए और उनके साथ पॉजिटिवली बात करनी चाहिए. तो उनके पास से ये अच्छा सीखने को मिला कि कभी भी मतलब ऐरा गैरा बात नहीं करने का, उनके साथ अच्छी तरह से बात करो तो अच्छा काम हो जाता है, और मन में पॉजिटिव विचार रखिए तो आपका हो जाता है. सेम उसी तरह से वो एक वड़ा पाव वाले थे, उन्होंने भी वैसा ही किया था. वो 1-2 बार हार गए, फिर उन्होंने बाद में नया मशीन लगा के और स्टाफ को ही मोटिवेट किया. तो उस हिसाब से स्टाफ के पास से भी उनको अच्छा खासा मिला, ये क्या बोलते हैं, बैक पोजीशन उनको मिला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल जैसा कुछ मिला. तो उसमें से भी सीखने को मिला कि भाई स्टाफ के साथ में भी अच्छी तरह से बात करोगे तो स्टाफ आपको पीछे नहीं हटने को देंगे, बोले कि सर आप आगे चलिए, ऑफिस का हम लोग संभाल लेंगे, वैसा करके. तो उस हिसाब से ये भी अच्छा लगा था. फिर राधा कृष्ण सर थे, उन्होंने भी अच्छा खासा बताया. उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज इसके अंदर रखिए तो आपको और अच्छा मिलता है. तो उस हिसाब से फर्स्ट में तो मेरे को अच्छा लगा, दूसरे में थोड़ा और अच्छा लगा. तो कनक जी को मैंने बोला कि भाई
मैं और वापस आऊंगा। जब भी आप करोगे FFF में कुछ एक साथ में मैं पैसा भर देता हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम का मेंबरशिप चाहिए, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है और आपको हर साल इसमें भी आना है कॉन्फ्रेंस में। मैं बोला आऊंगा, मैं कभी भी आप जब भी बोलोगे तभी आऊंगा। और कनक जी ने तो को वेरी फर्स्ट टाइम से मैं जानता हूं, तो उन्होंने 2008 से ही मुझे मोटिवेशनल की तरह से रखा हुआ है कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये करो तो हो जाता है। थैंक यू। अनुज जी अभी आप बात कीजिए। दोस्तों, सेकंड डिजिटल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें और क्वालिटी चेंज हुई हमारी कॉन्फ्रेंस की। आप देखेंगे जो संदीप मारवाड़ी नोएडा AFM स्टूडियोज के ओनर जो हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर के बारे में बहुत सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें, हिमाद्री सिन्हा सर ब्रांडिंग, अमात्या, इसके बाद राधा किशन पिल्ले सर ने और बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। एक्चुअली लर्निंग तो कॉन्फ्रेंस से मिलनी है, दैट इज वन पॉइंट, बट द काइंड ऑफ नेटवर्किंग वी आर गेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेज ना, that's फॉर अनदर लेवल। मैं आज जितने भी मेरे नेटवर्किंग है, मेरी रिलेशनशिप है, आज वोलेटिलिटी कोच का हमारा एक ऐसा परिवार है कि हम कॉन्फ्रेंस में तो जाना ही है, वहां से इतना सब कुछ लेके आते हैं कि एक मतलब परिवार से जुड़ जाते हैं। और लर्निंग में यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स, इफ यू सीइंग ना, दिस इज नॉट द नॉर्मल पे कि AMCs के लोग आ रहे हैं, नॉर्मली AMCs के हम लोग सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन वी हैव चेंज द कॉन्सेप्ट, क्वालिटी स्पीकर विद क्वालिटी एनालिसिस। और 2 कॉन्फ्रेंस तो हमारी डिजिटल हुई थी, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हमारी, अब जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम, जब हम फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं तो वी आर गेटिंग लॉट एनर्जी ऑफ ईच अदर। उसमें क्या होता है, हम सुबह 5 बजे फुटबॉल, चलो वो थर्ड कॉन्फ्रेंस में करेंगे, बाकी डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस में वी हैव द क्वालिटी स्पीकर्स एंड जो असली क्रक्स है अभी थर्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने में मजा आएगा, क्योंकि थर्ड में फिजिकली प्रेजेंस रह के जो हमने नेटवर्किंग और जो मतलब एक्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो मजा करा है, वो फोर्थ कॉन्फ्रेंस में और डबल होने वाला है, तो वो थर्ड कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। थैंक यू। कनक भैया, कनक भैया, The management, we talk about business, trust me, everything has actually generated from forces. Look at my journey, I would say it is a 3 phases. One is the startup phase, second thing is the growth phase, and third thing is the institutional building phase. And while the liquidity is on, we should all be dancing. When the liquidity goes off, we will have problems. But we will worry about those problems at that point of time. So all our Salaskars and Sharmas and Nayaks and others went into freezer, and they said we will put down the gun and we will not do anything about anything. And then the gangsters became emboldened and they went around shooting 101 businessmen in 1 year. I will probably just recap that I had brought forward a sort of esoteric meaning of the Mahabharata. We wish customers, consumers, investors to see that our offer gives them more benefit than their existing investment schemes. So one thing which I keep hearing is people talk about direct mode is growing big and they are feeling very threatened. You have a dream. The dream has come in the womb of the universe. It is the responsibility of the universe to fulfill the dream. The universe conspires to help you achieve your dream.
whenever you are talking of strategy or strategy thinking, certain things comes for any organization as a fundamental. People ask me what is the difference between what we've done so far and why the startups different. I think essentially they think very different, and what these sessions do is they allow you to चौथे माले पे है हमारा listen to a set of people. Look into the problems of Office people number and 3. get to solve them. चारवीं The पर minute हिसाब you पर start हिसाब solving people's चौथे माले पे problems, आई है the work is already done. And that's what he did. And that's what he pointed out in the third pillar, and that is Janpad. Commercial arrangement होता है 1.25 जो भी परसेंटेज है आप उनको वापस दे देते हो. So P2P lending is also same where there are many people coming together to give a loan to a person. We are just in the cusp of the growth. Therefore, that's something. It's going to be a big boom. That leadership before Saptanga to the So it'd be nice to understand when you are breathing high, what will happen is you'll tend to have yourself go into fight or flight. With this, friends, we come to the third edition, which is again the previous year, which was again very, very interesting year. And not only Paresh Bhai, Anuj and Abhishek, I will request others also to please share their ideas on this, and then we will have a short video on this also. Over to you all. Anuj, Abhishek, Rahul and everyone. I think before Nike in the September 2022 conference, we met in Goa for the FFF retreat in April. So I think around 50 people was there who met in Goa, and that was the we can say that was the net practice for the because in the April it was not conceptualized that we are going to have a bigger event, but the Goa event was very successful, though it was a retreat. But we enjoyed a lot. We have learned a lot of things every day. I remember every day during the first half, we used to have different session. We used to have different session, role play, game studies, and everything. Chetan was there. I think Manu sir was there, Aruj was there, Paresh sir was there, and a lot of us there. We have some case studies. Then session by Mr. Mayur Dalal, that was also interesting. So every day first half was learning, and then second half after lunch we used to chill out and we used to go for a ride and go for Goa sightseeing and all these things. That was a good networking and team building and team spirit was there. So that helped us everybody to organize a bigger event in the month of September, and that was also a huge success. We got a very good participation from all over India, and everybody enjoyed. I hope everybody enjoyed. I remember some of us reached that venue in Thane one day before, and when we are organizing everything, we felt like we are not in a corporate event or in a conference. It's a kind of a family event we are going to organize, and it's more like a family function or something that we are organizing, and some guests are coming for the next day. So in the September, there are guests from different part of the country and some eminent speakers, as well as some dignitaries, as well as some of the like Mr. Himadri Sena was there, Ruma Devi was there, and some other motivational speakers also there. So that was differently we met for the first time as a physical meet, and that was a huge success. And I think everybody has learned a lot of things from that particular conference in Mumbai last year. सबसे पहला तो गोवा में अप्रैल महीने में रखा था उन्होंने कॉन्फ्रेंस, मिनी कॉन्फ्रेंस, नॉर्मल गेट टुगेदर, जो 2 साल डिजिटल किया था, इस बार चलो थोड़ा सबको आमने सामने मिल लेते। तो उस टाइम पे मयूर दलाल थे, फिर बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मयूर दलाल ने एक ही सिखाया कि हर टाइम बिजनेस की बात नहीं करो, आपके सीनियर सिटीजन क्लाइंट है उनके पास जाके बैठो, तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि उसके घर पे क्या होता है, तो क्लाइंट के पास से ही आपको कुछ नए आइडिया मिलते हैं।
तो वो था, प्लस फुटबॉल गेम खेले थे हम लोग ने उधर, थोड़ा बहुत बीच पे जाके क्रिकेट खेला था, थोड़ा बहुत गेम खेला था। फिर उसके बाद थाना में जब थाना रिसोर्ट में हम लोग ने किया था, तभी रूमा देवी ने सिखाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज की हार मत मानो और जीत पे अड़े रहो। कि इन्होंने मुझे आज ना बोला है तो मैं इनके को समझा के ही रहूंगा। उनको किसी भी हालत में समझ में आना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो मेरे में कुछ गलती है तो मुझे वापस सीखना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि आपको सीखते रहना है कंटिन्यूस। उस हिसाब से ही मतलब उन्होंने बताया। फिर इंडस्ट्रीज के लोग थे, उन्होंने बताया कि आपको कंपलसरी सीखना है। और कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी आदमी उसको सीखने के लिए फुल स्टॉप नहीं होता है। आदमी चाहे 70 साल का हो, 80 साल का हो या 30 साल का हो, उसको कंपलसरी सीखना ही है। ये हम लोग को इसमें कॉन्फ्रेंस में हम लोग को पता चलता है। और ऐसी कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आता है। अनुज। तीसरी कॉन्फ्रेंस, आई थिंक कि थर्ड कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग कॉन्फ्रेंस रही, स्पेशली मेरे लिए। कि तीसरी कॉन्फ्रेंस में थाने में लश ग्रीन, मतलब एक पूरी 5 स्टार प्रॉपर्टी हमारे पूरे FFF के पास ही थी। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि मतलब इतना कुछ था करने के लिए। हम सुबह 5 बजे 6 बजे से स्टार्ट हो जाके गेम्स खेलते थे सुबह। उसके बाद फिर स्विमिंग करो, उसके बाद फिर 9 बजे टारगेट होता था पहुंचना कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद मतलब इतना, और बारिश लास्ट ईयर बारिश बहुत थी कॉन्फ्रेंस में। बट क्वालिटी ऑफ स्पीकर जो थे ना लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस में, रूमा देवी जी इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल कि उन्होंने कैसे मतलब एक घर में लेडीज रह के उसने कितना बड़ा समूह ऐसा बना लिया लेडीज के ग्रुप्स को, और कितने लोग का एम्प्लॉयमेंट। और इट्स मतलब अनदर लेवल ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद विजय केडिया जी, हम अक्सर उनके गाने सुनते हैं विजय केडिया जी को, तो उनके साथ लाइव देख के और उनके साथ मतलब उनको लाइव गाना सुन के उनका एक अलग ही किस्म का हो रहा था। मतलब मयूर दलाल जी यूएसए से, मतलब कैसे द क्वालिटी ऑफ स्पीकर इज मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और छोटी छोटी चीजों को कैसे कैसे ध्यान रखना है कॉन्फ्रेंस में, खाने का, चाय का, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम खुद पर्सनली सारे वोलेटिलिटी कोच टीम बना के एक सब चीजों का एक एक पॉइंट पे ध्यान रखते हैं एज अ फैमिली। नॉट लाइक नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस कि आप जाओ और केवल स्पीकर्स को सुन के और फोटो खिंचवा के आ जाओ। इट्स वी आर लिविंग ओवर देयर, वी आर पार्टिसिपेशन ओवर देयर। और थर्ड कॉन्फ्रेंस का सबसे जो मतलब मजेदार पार्ट ये रहा कि हर स्पीकर को, जितने भी कॉन्फ्रेंस में लोग अटेंड करे थे, एवरीवन हैज लिसन्ड, पूरा टाइम दिया उन्होंने। मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं लेकिन रूम में बैठे हैं, पूरे सब लोगों ने पूरा टाइम देके कॉन्फ्रेंस में। क्वालिटी स्पीकर्स जब होते हैं तो लोग सुनते हैं, और क्वालिटी स्पीकर्स के साथ शाम को एंटरटेनमेंट, एक दिन एंटरटेनमेंट रहता है पूरा। एंटरटेनमेंट में बिल्कुल मतलब लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हमने इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट करा कि वो जो दोस्त वहां पे जो बॉन्डिंग वहां बन गई वो आज भी मतलब बरकरार है। आज भी हम मतलब नए नए दोस्तों से उसी तरह से बात करते हैं पुराने, कि कॉन्फ्रेंसेस के जो संबंध या जो रिश्ते निकल कर आते हैं ना, वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। और FFF की कॉन्फ्रेंस बहुत ही एक एक बंदे की वैल्यू है वहां पे। मतलब अगर आप जब भी आप अटेंड करें, जो भी अटेंड कर रहा है, जो आप हम अपने दोस्तों को भी जो प्रेरित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कि यू विल सी 3 थिंग्स। एक तो क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स, इकोनॉमिक टाइम के साथ पूरा टाई अप है, पूरा इकोनॉमिक टाइम के साथ न्यूज़पेपर में आता है। तीसरा, जो कॉन्फ्रेंस में एक छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखा जाता है, वो शायद मैंने कहीं और कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखा। और चौथी चीज जो आप यहाँ से लेके जाओगे, कि कभी भी आपको कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे साल में कभी भी कोई भी सपोर्ट सिस्टम, कभी किसी की जरूरत हो, एवरीवन इज देयर फॉर यू, एवरी वोलेटिलिटी कोच इज देयर फॉर यू फॉर एवरीथिंग। सो मैं तो यही बोलूंगा कि 4th कॉन्फ्रेंस अब हम लोग कर रहे हैं 30 सितंबर 1-2, वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू ऑफ इंडिया, JW मैरिट शहर में। आप सब लोग, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आप इंडिविजुअली जाओगे 2 दिन रहने, बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, उस बहुत कम कॉस्ट पे 2 डेज रेजिडेंशियल। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करो, वी हैव लिमिटेड सीट्स और बहुत ही जल्दी फिल होने वाली हैं। आप लोग जल्दी सब लोग अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाओ, 3 दिन साथ में रहेंगे और वी विल थ्रिल दिस टाइम। और क्वालिटी स्पीकर्स इस बार और अपग्रेडेशन होगा। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड।
एक मिनट जरा और मैं ऐड करूंगा कि इसके अंदर अगले दिन मुझे बताया गया था कि आप में क्या क्वालिटी है वो चेक करने के लिए, और SWOT करके कोई क्वालिटी है, तो उसमें बोला कि ये क्वेश्चन पेपर है, कुछ 15-20 मिनट लगती है, वो पेपर भर दीजिए, ऑनलाइन है पूरा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्वालिटी है। और इस स्ट्रेंथ फाइंडर टेस्ट, स्ट्रेंथ फाइंडर, हाँ ऐसा कुछ था, वो गोल के ऐसा कोई कंपनी का वेबसाइट था, गोल कंपनी का, तो उसमें से मेरे को बताया गया था। तो मैंने बोला कि ये क्या है, बोलता है आप पहला क्वेश्चन आंसर लिखो फिर बताओ मेरे को। तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, जो मेरे को खुद को मालूम नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आप इस आपके ऑफिस में भी ऐसा करवाओ, आपके कलीग्स को भी करवाओ, तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो वो आदमी को वही काम दो, तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है वो, उस हिसाब से। थैंक यू। हाँ कनक जी। Is he sharing? So let's see the last year, and then we will come to the current year. Fourth FFF Conference in association with the Economic Times. So now just sharing a little a 1-minute video of this, and then I'll request everyone to speak about it. Will take place from 30th Sept 2023 to October 2nd, 2023 at JW Marriott Sahar, Mumbai. Filled with learning through games, networking opportunities, and top-class speakers from asset management companies of India. A gala musical evening with celebrities to reward and recognize the hard work of MFDs based on AUM. The conference will also have India's largest FinExpo with over 50 presenters and product displays. The conference and expo will provide excellent opportunities for learning, networking, and celebrating the hard work of MFDs and financial planners. The event will take place at one of the most premium properties of JW Marriott in India. Attendees will learn how to 10x by elimination, automation, and delegation, which will help them streamline their business and boost their productivity. Register now for the most elite mutual fund distributor conference in India and take your business to the next level. So friends, this year we have we'll be having 5 speakers who will be our keynote speakers. So 3 we have already finalized and 2 we are yet to do. Dr. Parimal Marchant, Director, Global SP Jain Business Global Management from Dubai, Mumbai and Singapore. So he is going to take us through how we all can actually handle
the wealth of 500 crore, 1,000 crore business families and help them. So this is going to be something very, very unique. I've requested him to be there with us for all the 3 days so that things become more worthwhile for each one of us. And then next we have Dr. Kumaravel from who has actually sold his 51% stake for 550 crore, 540 crores. And the idea is to learn from him how we all can actually create a value for our own companies and actually go to the next level by collaboration and by doing certain other things so that not only we work for creating wealth for our investors and for ourselves, but also create a value for our own company. And finally, Spice Girl of India. She's one of the 7 sisters who has actually struggled from poverty by selling spices on the streets of Jodhpur. From there, now they are an international brand selling their spices all across the world to Spain and US and London and so many other places. So they keep traveling and they know a lot of languages also. So it'll be interesting to interact with them as maybe at least she or maybe one of her sisters will be there with all of us and we'll see how things are working. So again, this is a little intro on this. And not only that, magazines also where all the coaches write their investors' financial success story, and that also is very, very interesting. With this, friends, this is about the conference. Yes, maybe no, maybe some of us can add a little more to that. And then at the end, I will also share the season 15, which we are about to start. So maybe all of you can just add a few things to this. Paresh bhai and rest of us. मेरे हिसाब से तो लर्निंग के लिए पैसा नहीं देखना चाहिए और आप लोग स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी तो फीस तो देनी पड़ती है तो यहाँ पर भी तो थोड़ी फी दे दो जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको फायदे में है मेरे हिसाब से आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और 32,000 भर के एक बार फर्स्ट टाइम अटेंड कीजिए आपको पता चलेगा आप सामने से बोलोगे कि सर ये दूसरी बार कब हो रहा है जल्दी से बताइए मेरे को अभिषेक Sir, I would like to add that the those are prior to entire 3 series, like I am from Liguri, we get very less this kind of opportunities to be present in this kind of conference. From the very beginning, in 2017, I joined. In 2016 November, I joined this industry. My father is there in the industry for he's a veteran of this industries. But one thing I have learned that the learning process should and when there is an opportunity to participate or to attend this kind of events, we should not miss, especially from the people who are from tier 2 activities. So or my humble request to each and every those who are watching is today or maybe later on, I always tell colleagues in some other small cities also, and I encourage them to at least join once these kind of conferences because I've been to different conferences, other conferences also, but this is quite different. So rightly said by Paresh sir, that is 32,000 or 34,000 doesn't matter most. If you have eager to make a big impact, or if you want to grow in your career of this distribution business, so one should join these conferences, and they can as much as he or she can do from here. He can build a good friendship, and obviously at the end of the day,
he or she should implement in his day-to-day practice. So that's all from my end. So I look forward more and more participation, and I hope all the best to Kanak sir and all of our who are organizing this, so that we can get more and more participation in this the upcoming conferences. Thank you everybody. अब मैं तो दो ही शब्द में अपनी लाइन खत्म करूंगा, और उसके बाद तो क्या कहते हैं राहुल भाई का एक्सपीरियंस भी जानेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो मैं तो ये दो ही चीजें बोलूंगा, दिस इज नॉट अ कॉस्ट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको लाइफ टाइम काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पूरे साल भर के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग मिलती रहेगी कि आप कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट से तो बहुत ज्यादा की कॉस्टिंग है, ओरिजिनल कॉस्टिंग, लेकिन मतलब आप सोचो कि स्पीकर्स, इतने सारा वेन्यू, पूरा मतलब इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, प्लस सबसे बड़ी बात है लर्निंग। जो लर्निंग यहाँ मिलेगी, जो बॉन्डिंग यहाँ मिलेगी, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लोग सब लोग अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आपके कलीग्स हैं, सबको जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, मल्टीपल ग्रो करना चाहते हैं, SIP बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लाइफ में बेटरमेंट करना चाहते हैं, so you all can inspire others and join the conference. एंड राहुल चंदालिया भाई, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Thank you. Thanks, Anuj. How can I forget the third FFF conference? Hope I'm audible, yeah? Correct? Yes. Yes. Third FFF conference, मुंबई की बारिश में, मुंबई के ट्रैफिक से जूझते हुए जब हम कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे साथ दो जन और थे, हम लोग बस टैक्सी से उतरे एंड स्टेज वाज सेट फॉर अस. Stage was set for us for the first VC talk. I can never forget the first FFF conference ever in my life. And one thing which I would definitely like to share with about FFF is FFF is not a fraternity. It's a family. FFF में जुड़ने के साथ साथ you have immediately all of us, most of us, not all of us, but most of us are single man army. IFAs, we working together. We are like a single man army. हमारे ऑफिस में 1, 2, 3 स्टाफ होते हैं, but with FFF immediately I have wings. I have associated chartered accountants, I have associated estate planners, I have associated legal wealth planners, etc. with me today because of FFF altogether. FFF gives you wings altogether. कहीं पे मैं पढ़ रहा था, it was written, आप अपने नजदीकी 5 लोगों का एवरेज हो। हर इंसान अपने नजदीकी 5 लोगों का एवरेज है। सो आप किसके साथ मित्रता करते हो, आप किसके साथ, कौन से 5 लोगों के साथ टाइम बिताते हो, दैट डिफाइंस यू। एंड आई थिंक इन वन ऑफ द लास्ट सेशन चेतन ने कहा था, योर ट्राइब इज योर वाइब। दिस इज माई ट्राइब, दिस इज माई वाइब। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से विद FFF. कॉस्ट इज डेफिनेटली नॉट अ मैटर टू बी डिस्कस्ड विद FFF. थैंक यू. Over to you, Kanak. Shrikant bhai is there. Shrikant bhai, if you want to share something. Yes, please. क्या शेयर करेंगे? जब बड़े सब सिक्सर मार दिए तो हम क्या 1 रन 2 रन मारने के लिए आएंगे क्या? अवार्ड देने के लिए आएंगे ना? अरे example is there. So बस the sharing which I want to do is that, as Rahul said, you are the average of 5 people, but the thing is you have to implement that. एवरेज तो रहेंगे, बट इंप्लीमेंट कैसे होगा? द बिगेस्ट एडवांटेज विद दिस बीइंग इन दिस ग्रुप इज बिकॉज देयर इज एन एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप दैट्स गोइंग ऑन, एंड वो तो यू नो व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत एक्टिव है, एंड वहां जंक नहीं जाता है, नो जंक एट ऑल. बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी फोर्स टू रीथिंक एंड डू थिंग्स. तो मुझे याद है, मैं जब परेश भाई से बात किया था कि हाउ डू यू पिच दैट CGF, एंड मैंने पूछा कि 18 साल के बाद तो वो तो चले जाएगा पैसा. बोला कैसे चले जाएगा? व्हाई डोंट यू पिच इट टू रिटायरमेंट फंड? तो जब पेरेंट इन्वेस्ट करता है बच्चन के नाम ने, तो 18 साल तक वो बढ़ गया पैसा, फिर रिटायरमेंट तक आ जाएगा. जब वो रिटायर होगा तब उसको याद आएगा कि मेरा पिताजी ने सिर्फ 5,000 डाला था, अभी देखो इट इज बिकम नियरली 1 करोड़ 2 करोड़. तो बस ये छोटी छोटी चीज है ना जो हम सीखते हैं, दैट्स ऑल अमेजिंग. यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स.
जैसे मैंने लास्ट ईयर एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं किसको दिया था, कि इंस्टेड ऑफ 5000 SIP फॉर 20 years टेकिंग फ्रॉम क्लाइंट, टेक ओनली 15,000 SIP बट ओनली फॉर 5 years। 15,000 का SIP लेना है, सिर्फ 5 साल लेना है। तो क्लाइंट को यही बोलना है, अरे 20 साल क्यों देते हो भाई, सिर्फ 5 साल दे दो, बाद में 15 साल एंजॉय करो। लेकिन जो 5 साल वो देता, 5,000 जो देता है 20 साल के लिए, ही इज गिविंग 12 lakhs टू यू, एंड 15,000 जो दे रहा है 5 साल के लिए, ही इज गिविंग ओनली 9 lakhs टू यू। बट दोनों भी वो 20 साल रखेगा, लेकिन 20 साल के बाद जब पैसा निकालेगा, जो 20 साल तक भरा था 5-5 हजार रुपया, he gets 66 lakhs. But the one he pays only for 5 years, he has paid only 9 lakhs, 3 lakhs less than the previous one, and he will get 1 crore 6 lakhs. मतलब उन्होंने 3 लाख कम दिया एंड 40 लाख एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो ये मैं लास्ट टाइम दिखाया था, एंड जब मैंने ये दिखाया था तो आई रिमेम्बर, आई थिंक अर्पण एंड चेतन, दे वर सो अनाउंस्ड बाय दिस एंड दे हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग। इससे क्या हुआ, सिप बुक बहुत बढ़ जाता है। तो दीज थिंग्स वी लर्न, वी टीच ईच अदर, वी लर्न फ्रॉम अदर्स। तो जैसे हम देखते हैं तो वी ऑल ग्रो टुगेदर। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि दूसरा जब कॉन्फ्रेंस होता है वहां सिर्फ प्लस लोग होते हैं एंड माइनस लोग को इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारा जो FFF कॉन्फ्रेंस होता है वहां जब प्लस लोग है, दे गो एंड टॉक टू द माइनस पर्सन एंड मेक दैट माइनस पर्सन बिकम प्लस। तो यहाँ सब लोग इक्वल है, देयर इज नो माइनस पर्सन, एवरीवन इज इक्वल, एंड जो भी प्लस है वो माइनस को प्लस कर देगा। ये चीज आपने गोवा में बताया थी। यस यस यस, अनुज बराबर है। अरे राजीव सर, आप तो बोलो कुछ। हाँ डेफिनेटली बोलेंगे। गुड इवनिंग, हम तो सबको सुन रहा था। मेरे लिए FFF फ्रेटर्निटी एंड कनक भाई, कनक जी फिनोमेनल, मैं तो उनको मेंटर भी बोलता हूँ। सबको सब ने बोला मेरा जो बिजनेस ग्रोथ हुआ है वो, और इतना सारे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, मतलब पहले हम लोग क्या कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, कुछ क्या प्रोग्रेस होगा, क्या बिजनेस होगा, बस यही थोड़ा खाना खा के चला आता है। लेकिन ये जो फ्रेटर्निटी है यहाँ पर, यहाँ किसका कितना एयू है, क्या काम कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा तरीका से काम कर रहा है, सब हम लोग शेयर करते हैं और जान सकते हैं। तो वो एक कहावत है ना, जब गांव में, वो हम लोग पहले भी सुना था, कॉन्फ्रेंस में जब जाके भी सुना है, जो गांव में बारिश नहीं हुआ, बहुत दिन से पूजा पूजा सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद एक फार्मर जाके वो उसका वो एक्स लेके वो काम थोड़ा जमीन को खोद रहा था, तो बाकी सब लोग उसको बोल रहा था तुम पागल हो गया, बारिश नहीं है क्या करोगे। तो बोला, वो पूछा नहीं, अगर हम नहीं खोदेंगे तो बारिश आएगा तो कैसे जमीन को रेडी कर रहा है, अगर बारिश आ जाएगा तो हम पेड़ उसको बोल सकते हैं। तो क्या है, कॉन्फ्रेंस ये सब जाएंगे तो हम तो सोचते हैं ये जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, अगर हम सब चाहते हैं मेरे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एयूएम हो, बिजनेस बढ़े, लेकिन अगर बिजनेस आ जाएगा तो मैं हूँ, तो बिजनेस एक कॉन्फ्रेंस, एक फ्रेटर्निटी, ये सब हम तो सोचते हैं ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। अगर जैसे राहुल भाई कैसे बिजनेस कर रहा है, सिकंद भाई कैसे बिजनेस कर रहा है, परेश भाई कैसे बिजनेस कर रहा है, भूपिंदर कैसे बिजनेस कर रहा है, हम लोग सब जान रहा है। अगर कोई किसी का प्रॉब्लम भी होगा, तुरंत एक व्हाट्सएप में मैसेज में हमको असिस्टेंट मिल जाएगा। फैंटास्टिक, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ है, और हम तो चाहते हैं सब आ जाए, सबको बोलते हैं आ जाओ, इस फ्रेटर्निटी जोड़ो, बिजनेस बढ़ाओ, बस दैट्स इट। यस सर। પરેશભાઈ કેમ છો? બસ મજામાં। हम तो अर्थमित्र गुरुकुलम से कनक सर से जुड़े थे। यस। उस वक्त एक बार जाने कि वोलेटिलिटी कोचेस क्या होता है, उसके बाद से जो सप्तगंगा से जुड़े हैं 2020 से, तो फिर अभी तक जुड़े हैं, क्योंकि उनके जो मतलब जिस तरह से वो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे से करते हैं और फुल ये देते हैं, मजा आ गया। यस। हर बार मैं तो बोला हूँ कि जब भी कॉन्फ्रेंस होंगी मैं तो आऊंगा। बस वही चाहिए, और साथ में दोस्तों को भी लेके आना है। दोस्तों को मैं बताता हूँ, जरूर बताता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, ये कोई कॉस्ट नहीं है। बरोबर है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो बस। राइट सर। कुंडा सर।
बहुत बढ़िया. Thank you so much for sharing. And I believe just to update you that आज के session we will be starting with season 15 also. So stay tuned and keep learning from all our speakers who will be sharing one strategy in each session. ये पूरा का पूरा season strategy के लिए ही है. और not only that, बहुत सारे शहरों में we are doing dare to win also, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए है. तो ये जयपुर के लिए हो रहा है. ये सब जूरी मेंबर्स हैं. दिस इज फॉर नागपुर, दिस इज फॉर सूरत, दिस इज फॉर इंदौर, दिस इज फॉर नासिक, and this is for Guwahati. All the cities will have all this events coming up, lined up, and in the meantime, the season 15 is starting next Tuesday. तो आप ट्यून्ड इन रहिए एंड लर्न करते रहिए. और जो वोलेटिलिटी कोचेस नहीं हैं उनके लिए भी देयर इज अ स्पेशल थिंग. अगर इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस, यू आर गेटिंग दिस 12 प्रोफेशनल सेशंस ड्यूरिंग द ईयर, and you also become a part of FFF Pro members group. यहाँ पे you get 10 amazing tools, mutual fund analysis software, master classes, and you can make the financial plan, and you can actually do equity analysis also. So this comes to you free of cost for all those people who are looking forward to all of you to have you at the conference. So Nikita Bataran kare. So with this, anything else anybody would like to share, speak, or any questions if anybody is having, like more than people speaking, सब तो अच्छा ही बोलते हैं क्योंकि experience रहता है. जो लोग नहीं आए, if somebody, if you have some questions, like I can see Yes ji Daruwala ji, Krishna Kunda, Abhishek Aneja, Anuj, Sanjeev Chawla ji, and all of them have been there at the conference, and it has been quite exciting for all of us. So anyone who want to know something, you can ask them. No questions. That's good. Chetan bhai, you can share something. So I was just listening to सबको मैं सब सुन रहा था. तो everyone were talking about conference का cost, ये investment है, ये है. I mean, it don't look as a cost. ये खर्चे के तरफ नहीं, आप investment. See, what I feel is, जब आप अपने client को manage करते हो, वो कब आपको expense ratio पे ज़्यादा focus होता है? Whenever a client asks you too many things on expense ratio, कब होता है? जब आपका portfolio benchmark के नीचे perform करता है. So I feel FFF conference is like a, आपका जो कॉन्फ्रेंस का जो परफॉर्मेंस है या आपका जो वैल्यू ऐड हो रहा है, दैट इज फार फार हायर देन द बेंचमार्क. बेंचमार्क इज लाइक व्हाट यू रीड एवरीडे न्यूज़पेपर से, मीडिया से, आप जो सीखते हो, दैट इज अ बेंचमार्क. एंड व्हेन यू कम टू सच कॉन्फ्रेंसेस, द काइंड ऑफ लर्निंग यू डू, इट आउट परफॉर्म द बेंचमार्क. जब आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हो तो कोई भी क्लाइंट कॉस्ट का पूछेगा नहीं, राइट? जब आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहा है तो नो कस्टमर इज बॉदर आपका कॉस्ट क्या है, बिकॉज ही इज सीइंग अ गुड परफॉर्मेंस. सिमिलरली जब आप रोज सीखते हो, जो भी न्यूज से, मीडिया से, टेलीविजन से या यूट्यूब वीडियो से या जो भी मीडिया से सीखते हो, और जब आप FFF कॉन्फ्रेंस या कोई भी ऐसे कॉन्फ्रेंस में आते हो और आप जब सीखते हो वहां पे, विच इज मच बेटर, और वहां से much better than what you learn every day, and you feel wow about it, then you don't worry about the cost, right? So that is how it works. So I feel that is what we have to do when we have, see, I have attended 3 conferences, FFF, 2 digital में, एक last year जब हम मुंबई में किए. How it has helped me is I have seen very good speakers which has impacted on my day-to-day thought process. Like how to identify, how to see things generally. नहीं तो हम लोग क्या होता है, हम लोग सुबह स्टार्ट होते हैं, देखते हैं किस क्लाइंट को फोन करूं, कितना टॉप अप कर सकता हूं, कहां से लेके आऊंगा, बट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस. बट व्हेन वी लिसन टू सो मेनी स्पीकर्स एंड सो मेनी अदर काउंटर पार्ट्स, लाइक जो अपने कोलिग्स है या जो फैटर्निटी के लोग हैं, हाउ व्हाट प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न. और जब हम लोग सीखते हैं, हम देखते हैं, तो हमको लगता है हम कुछ नहीं कर रहे अभी तक. So that give us more and more energy towards doing something extra. और वहीं से हमारी ग्रोथ आती है.
Varna I feel that growth will become stagnant and somehow you will lose the interest on what you are doing. So अगर आपको अपना आपको I feel if you are not updated, you are outdated. If you don't update yourself with the market, you will be outdated in market. Means आपको markets पे बाहर चले जाओगे. Slowly, धीरे धीरे से customer will start leaving you because you will talk same old thing what they already know, because there are 100 people more to which are talking same thing to him. So how can you talk different? How can you interact with the client different is when you know things differently. And if you have to know things differently, you have to attend such forums, you have to attend such fraternity events, and then only you can know. You have to meet people. You have to meet people at different cities, different countries with different bandwidth of knowledge, and how you implement after meeting them is more important. And you can use Kanakji as a mentor and and help you to guide, like आप किस चीज को अपने अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करो और कैसे डेवलप करो. तो इतना ही मैं बताना चाहता हूँ. आई थिंक ओवरऑल दिस इज व्हाट मेक डिफरेंस ऑन आवर डे टू डे एक्टिविटी. बाकी तो सब ठीक है, खर्चा वर्चा तो हर एक चीज में है. आप कहीं पे भी जाओ आप खर्चा करोगे, बट अगर आपको उसमें वैल्यू एड मिल रहा है, if the knowledge what you are getting is more than what you are getting on day to day reading of newspaper or media, then I don't think you focus on cost. You only because यार आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. जैसे हम बोलते हैं ना, जब आप क्लाइंट को किसी भी इन्वेस्टमेंट गोल के साथ अटैच कर ले तो वो रिडीम नहीं करेगा बीच में. तो अगर आपका गोल है लर्निंग, तो आप बीच में ये सब नहीं सोचोगे. दैट इज व्हाट आई फील. Chetan, well said. And I'm sure we all can also look. I keep saying that no, you can only understand or you can actually feel the smell of a flower only when you are in a garden. Similarly, you have to be there in order to feel and experience whatever it is. And we feel that once you are a part of this conference, your frequency level should go up, which actually goes, and you are able to attract all those things, whatever is required in the life. So with this note, we are done. Any other questions? Please do connect with any one of us, whether it is Chetan, Rajiv Da, Yasdi Daruwalaji, Paresh Bhai, Abhishek, Anuj, any one of us, Abhishek, Rahul, Sanjeev Ji, each one of us, Rakesh Tripathi Ji. So any one of us, whoever is there, we'll be all happy. And Naresh Bhai, Krishna Kundaji. So all of you looking forward. Yes. Good. With this, we are done for the day. And thank you. Please do attend the season 15 of Beyond Classroom. And thank you so much, especially all those people who have shared today. Thank you, sir. Thank you. Good day. Thank you.